Good morning, students. Today I am going to discuss a very important topic, potentiometer. First of all, what is potentiometer? Potentiometer is a device which is used to measure EMF or potential difference. So let us suppose AB is a wire made of constantan having uniform area of cross section. Generally, the length of wire is 4 meter to 12 meter. So this is a very long wire AB. These are two ends of wires. Uh, this end A is connected to positive terminal of the battery, and another end B is connected to the negative terminal of the battery through key, which is switch and rheostat. तो चलिए मान लेते हैं कि दिस टर्मिनल इज एट 5 वोल्ट. सो दिस पॉइंट विल बी एट 5 वोल्ट because it is directly connected to 5 volt, and this terminal is supposed at 0 volt. So potential difference between A and B is equal to 5 volt. This is at 5 volt, this is at 0 volt, so difference of potential between A and B is 5 volt. Now, when current is passed through this wire with the help of this battery, then the potential will decrease because current flows from higher potential to lower potential. Here potential is 5 volt, इधर घट गया 3 रह गया, फिर यहाँ 2 रह गया, यहाँ 1, here 0. So 5 volt potential means कि at this point 1 coulomb of charge has 5 joule of energy. 5 joule per coulomb means 5 volt. So here energy of 1 coulomb of charge is 5 joule. जैसे ही ये चार्ज इधर आएगा, it will collide with the atoms and its energy will decrease. Suppose its energy at J is 3 joule, 3 जूल, तो एयर पोटेंशियल विल बी 3 जूल पर कूलम, मीन्स एक कूलम के पास 3 जूल एनर्जी रहेगी और यहाँ पोटेंशियल 3 वोल्ट. यहाँ पे कूलम की एनर्जी जो है 2 जूल रहेगी, सो पोटेंशियल 2 वोल्ट, देन हियर 1, हियर 0. We measure potential difference with the help of a voltmeter. So this end of voltmeter is at 5 volt. This jockey J is at this point, so its potential is 3 volt. So potential difference between point A and J, or this length L of the wire, is 2 volt. A J के बीच में potential difference 2 volt. If I move jockey to this position which is J dash, तो ये पॉइंट 2 वोल्ट पे. नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड जे डैश इज 5 minus 2, इट इज 3 वोल्ट. सो ए जे डैश के बीच में 3 वोल्ट, ए जे डबल डैश के बीच में 4 वोल्ट, ए और बी के बीच में 5 वोल्ट. ए जे लेंथ छोटी है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम है. ए जे डैश थोड़ी ज़्यादा लंबाई है, पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़्यादा है. ए जे डैश और भी ज़्यादा लंबाई है तो पोटेंशियल डिफरेंस और भी ज़्यादा है. सो वी कैन से वोल्ट मीटर की रीडिंग ज़्यादा आएगी अगर हम ए पॉइंट और जॉकी के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा रखेंगे. सो कंस्ट्रक्शन पार्ट ऑफ पोटेंशियोमीटर जो है, इसमें हम 4 मीटर से लेके 12 मीटर कुछ भी हो सकती है इस तार की लंबाई. वी स्ट्रेच दिस वायर ऑन अ वुडन प्लैंक. अ स्केल इज फिटेड पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द वुडन बोर्ड. Now if R is resistance of AJ length of this wire, suppose I is current flowing in the wire, then according to Ohm's law, potential difference between point A and J is equal to current जो वायर में जा रहा है into resistance इस तार के टुकड़े की. R we know it is equal to rho L by A. This potential difference we can rewrite it only V.
So this V denote potential difference between A point and J point. Now, if area of cross section of this wire is uniform, means ये तार ऐसा नहीं कि कहीं से मोटी है कहीं से पतली है. अगर यूनिफॉर्म थिकनेस है तो A is constant. I अगर हम इससे constant करंट पास करेंगे, this term will become a constant quantity. So let this constant is K. So this constant is called potential gradient. From here we conclude that potential difference is directly proportional to length of constant wire. जितनी ज़्यादा लंबाई उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस. सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर कि इफ कांस्टेंट करंट इज पास थ्रू अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, then potential difference across any section of the wire is directly proportional to length of that section. In other words, जितनी लंबी तार उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस. मीन्स ए और जे पॉइंट के बीच में दूरी कम होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस कम. ए और जे जो कि यहाँ लाएंगे हम तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा. So this is working principle of potentiometer. This is equation of straight line. We know y is equal to 3x. If we plot graph between y and x, it will be a straight line passing through origin. So this 3 is called slope of the line. So similarly here, this is along y-axis, potential difference. L is along x-axis. So this K will give potential gradient या slope. This potential gradient will be slope of this graph या line. Now we use potentiometer to compare EMFs of two cells and to determine internal resistance of a primary cell. So here is the circuit diagram. This is wire AB of potentiometer. These are two cells जिनकी EMF की रेशो हमने निकालनी है. Comparison means ratio. The positive ends या terminals of these cells having EMF E1 and E2 are connected at A. And positive terminal of this battery is also connected at A. This is switch. And this is rheostat. With the help of rheostat we can change the value of current flowing in this constant wire. Now here you see, suppose these are two cells, its EMF is 3 volt, its EMF is 2 volt. This is galvanometer. Galvanometer indicates direction of flow of current in circuit. Closed path में there are only two possible directions, clockwise and anti-clockwise. This cell is trying to send current in this direction. Positive terminal से current निकलता है. ये cell इधर भेजना चाहता है current. So both are opposing each other. But this is it has more EMF. So we can say it will supply current. So current will flow in this direction, or you can say anti-clockwise direction में जाएगा. Now if EMF of this cell is 2 volt, lower cell is having 3 volt, then this cell will supply current. Now current will flow in clockwise direction. In galvanometer we have a scale, इसमें 0 बीच में. If current flows in say clockwise direction, this pointer will be deflected towards this direction. और अगर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करता है तो ये पॉइंटर 0 से इस तरफ डिफ्लेक्ट होगा. So we can say it gives direction of flow of current. So here direction of flow of current will change. अगर लोअर की EMF ज़्यादा है, अपर की कम है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज क्लॉकवाइज. अगर इसकी EMF ज़्यादा है, इसकी कम है, तो करंट फ्लो करेगा हमारा इस डायरेक्शन में. इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज. नाउ इफ बोथ सेल्स आर हैविंग इक्वल EMF,
no current will flow through galvanometer and its pointer will remain at O. तो यही चीज़ हम यहाँ इस्तेमाल करने जा रहे हैं। नाउ एज आई टोल्ड यू, इसकी EMF, इसकी पोटेंशियल सपोज 5, इसका पोटेंशियल है 4 वोल्ट, इसका पोटेंशियल 3 वोल्ट, इस बिंदु का पोटेंशियल 2 वोल्ट और इसका 1 वोल्ट और इसका 0 वोल्ट। Now maintain constant current in this wire of potentiometer. So जब करंट जाएगा तो ये 0.5 वोल्ट पे, ये 4 पे, ये 3 पे, ये 2 पे, 1 पे, 0 पोटेंशियल घटता जाएगा इस तरह। So we can say this AJ length is like a cell of EMF 3 वोल्ट। इस पॉइंट का पोटेंशियल 5, इसका 2, तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन A point and J point is 3 volt, so it is acting like a cell of 3 volt EMF। अगर मैं जॉकी को यहाँ टच करता हूँ, दिस वायर AJ dash will act like a cell of 4 volt EMF। So how will you compare? You close this gap, or you can say insert key in gap number 1, या ये कह लो इस तार को जोड़ दिया। So E1 cell is in circuit। तो अगर इसकी EMF 3 वोल्ट है, let us say its EMF is 3 वोल्ट, देन ये पॉइंट जो है 5 वोल्ट पे, दिस इज एट 2 वोल्ट, तो दिस वायर इज बिहेविंग लाइक अ सेल ऑफ 3 वोल्ट EMF। it also has 3 volt EMF। so if I touch jockey at J point, so ये सिचुएशन होगी, this is 3 volt, this is AJ wire which is acting like a cell of EMF 3 volt, this is EMF E1, so no current will flow through galvanometer if I touch jockey at this point। अगर मैं इसको यहाँ टच करता हूँ जॉकी को 3 वोल्ट के पॉइंट पे, तो दिस इज एक्टिंग लाइक ए, और ये पॉइंट दिस इज एक्टिंग लाइक अ सेल ऑफ 2 वोल्ट EMF, और जॉकी अगर यहाँ टच करूँगा तो इसकी EMF ऊपर वाले सेल की 2 वोल्ट और इसकी EMF 3 वोल्ट। सो ये वाली सिचुएशन होगी फिर। सो करंट गैल्वेनोमीटर से ऐसे फ्लो करेगा। एंड इफ आई टच जॉकी एट दिस पॉइंट, so this cell is behaving, this wire AJ dash is behaving like a cell of 4 volt and its EMF is 3 volt, so current अब ऐसे flow करेगा। but if I touch here then no current will flow through galvanometer, और हम बोलेंगे कि null point is overtained। जितनी इसकी EMF है उतना ही potential difference AJ तार के across है, and no current will flow through point galvanometer। so let us suppose AJ length is L1। so E1 जितनी इसकी EMF है, अगर ये 3 वोल्ट है तो AJ के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट। दिस इज EMF ऑफ सेल, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AJ। so we know E1, it is V, here I am denoting this V by E1, so E1 is KL1। so now remove key from gap number 1, यहाँ से हटा दीजिए and insert here। now cell of EMF E2 is in circuit, again slide या move jockey on the wire and obtain balancing length for this EMF। अगर इसकी EMF कम होगी तो ये कम लेंथ पे बैलेंस होगा, अगर इसकी EMF से 2 वोल्ट है तो इसकी बैलेंसिंग लेंथ ही आएगी, जो कि आपको यहाँ टच करना पड़ेगा। इसका पोटेंशियल डिफरेंस A और इस बिंदु के बीच में इट इज़ 2 वोल्ट, इसकी EMF भी 2 वोल्ट, सो नल पॉइंट इज ओवरटेन। सपोज दिस लेंथ A और इस पॉइंट के बीच में इट इज़ L2, so then E2 is KL2। जितनी ज़्यादा लेंथ उतनी ही EMF।
ये सेल ऑफ EMF 3 वोल्ट इट विल बी बैलेंस्ड हेयर, ज़्यादा लेंथ होगी, और दिस सेल जिसकी EMF 2 है इट विल बी बैलेंस्ड हेयर। सो ये शॉर्टर लेंथ पे बैलेंस होगा नीचे वाला, और ऊपर वाला लॉन्गर लेंथ पे। सो यू डिवाइड दीज टू, K will cancel out and E1 upon E2 is L1 by L2. So L1 and L2 की वैल्यू जो है you can read with the help of scale which is fitted parallel to the length of wire. So from here ratio can be calculated. Now next, determination of internal resistance of a cell. So this is our circuit diagram. ये ऊपर वाला circuit this is called primary circuit and ये नीचे वाला this is secondary circuit. So let us suppose EMF of this battery is E dash, this is switch, this is rheostat to change current. So maintain constant current in the wire of this potentiometer, and we know EMF is greater than terminal potential difference. Now without inserting key in this gap, obtain balancing length for EMF. से इसकी EMF 3 वोल्ट है और this point is at 5 volt, this point is at 2 volt. So potential difference between point A and J is 3 volt. Its EMF is also 3 volt. So no current will flow through galvanometer. So EMF of this cell is equal to potential difference between point A and J. Let us suppose this AJ length is equal to L1. So E is equal to KL1. Now this is a resistance box. Now insert suitable resistance R with the help of this resistance box. तो say this is a bulb, ये cell है. If this switch is closed, open, no current will flow through this bulb. It will not glow. So we were not drawing any current from this cell when this K was open, this key was open. When we touch jockey at point J, no current will flow through galvanometer. Reason being, its EMF is 3 volt. Potential difference between A and J is also 3 volt. So null point पे cell से कोई current नहीं flow करेगा. It will not supply any current. This condition will be like this: 3 volt, no current from the cell. So when we do not draw any current from the cell, तो इसके terminal के बीच में जो potential difference होगा that is called EMF. So we obtain null point for EMF of this cell. Now if you close this key, this is bulb, current will flow through this bulb and it will glow. So now we are drawing current. So इसकी EMF अगर suppose 3 volt है, when it supplies current, then potential difference between its terminals will fall. Part of the energy will be lost across its internal resistance. से अब इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट. दिस इज एट 2, दिस इज एट 0. सो इफ आई क्लोज दिस की, दिस बल्ब इस रजिस्टर के दोनों किनारों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अब 2 वोल्ट होगा. And it is called terminal potential difference because cell is supplying current, this bulb is glowing. So इसके cross potential difference 2 volt and it is equal to terminal potential difference. This is positive terminal connected at this point, negative terminal connected at this point. तो इस रजिस्टर का लेफ्ट वाला एंड यहाँ जुड़ा है, तो दिस एंड विल बी एट 2 वोल्ट and this end will be at 0 volt. So potential difference across this is 2 volt. This is terminal potential difference जो कि EMF से कम होगा. Now let it be V. So V is KL2. ये suppose this point is at 3 volt. So null point इसके लिए हमें कहाँ मिलेगा? You will move jockey to this point and
This is at 5 volt, this is at 3 volt, तो potential difference between this point and J dash is 2 volt और इसके across भी 2 volt है, so null point will be obtained. So we can say when this key is closed, potential difference between terminals of cell will decrease और ये सेल वी कैन से अब ये एक किस्म से 2 वोल्ट का काम कर रहा है. So because 1 joule energy will be wasted by 1 coulomb of charge in overcoming internal resistance. So अब इसके टर्मिनल के बीच में potential difference 2 volt. Now you will obtain null point for 2 volt जो कि definitely कम length पे आएगा. So V is equal to KL2, divide these two, you will get E upon V is equal to L1 upon L2. We know internal resistance of a cell is given by this. E upon V is equal to L1 by L2. R is the resistance inserted in the secondary circuit. This is called secondary circuit with the help of this resistance box. So by measuring these lengths with the help of scale which is fitted parallel to the length of wire, we can calculate internal resistance of the cell. Now sensitivity of voltmeter. A potentiometer is said to be sensitive if potential gradient is small. We know potential gradient from here V is equal to KL. Now V is equal to KL, from here V by L is equal to K. So potential gradient is potential difference per unit length. We can say ये 0.5 वोल्ट पे है और ये C पॉइंट इसका पोटेंशियल कम होगा. लेट अस सपोज इट इज 4.8 वोल्ट. इधर जैसे चार्ज आएगा पोटेंशियल विल डिक्रीज. सो A पॉइंट इज एट 5 वोल्ट, दिस इज एट 4.8 volt. तो potential difference between these two points is 0.2 volt. Suppose AC length is 1 centimeter. So K is equal to V by L. V is 0.2 volt. L is 1 centimeter. So this is K. So K is 0.2 volt per centimeter, which means कि if 2 points on this wire are separated by 1 centimeter distance, then potential difference will be 0.2 volt. So this is potential gradient. So K should be small. K is its least count. So if potential gradient is small, then this meter, a potentiometer, is said to be sensitive. So K is equal to V by L, and V, suppose R is resistance of this wire. L is length of this wire. This point and this point, they are at potential, they are having potential difference. तो let us suppose इन दोनों के बीच में potential difference VAB है. L is length of wire. So this potential difference according to Ohm's law, if I is the current flowing in this wire and R is resistance of this constant wire having length L, then VAB according to Ohm's law is IR. So K can be decreased, K can be decrease. K small होना चाहिए potential gradient, तब sensitivity ज़्यादा होती है. So K can be decreased. Either you increase length, अगर L बढ़ेगा K छोटा हो जाएगा, और you decrease current. If I is decreased, K will also decrease. So these are two methods to decrease K or potential gradient. Either you decrease I or you increase L. Now potentiometer measure EMF more accurately than voltmeter. Reason being, it is a null point method. It does not draw any current. If its EMF is 3 volt, this point is at 2 volt,
potential difference between A point and J point is 3 volt. EMF इसकी भी 3 volt. No current will flow through the galvanometer. So इससे कोई करंट नहीं ड्रॉ कर रहे हैं हम, तो इसके टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज इट्स EMF. Now numerical based on potentiometer. It is potentiometer. This is variable resistance. We can change resistance. This is a cell of say EMF E. These are two cells which are joined in series. These are also two cells joined in series. ये डिफरेंट सेल्स नहीं है. पहले मैंने इन दो सेल्स को ऐसे जोड़ा, इसका पॉजिटिव टर्मिनल, इसका नेगेटिव टर्मिनल, इसके नेगेटिव टर्मिनल से दूसरे सेल का नेगेटिव टर्मिनल, और आगे पॉजिटिव टर्मिनल, ये जॉकी और बीच में गैल्वेनोमीटर जो कि नहीं दिखा है. नाउ इफ यू लुक केयरफुली, दिस सेल इज ट्राइंग टू सेंड करंट इन दिस डायरेक्शन. ये पॉजिटिव टर्मिनल से निकला है. ये सेल इधर करंट भेजना चाहता है. सो वी कैन से इसका करंट तो क्लॉकवाइज ऐसे 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 ऐसे, और ये करंट भेजना चाहता है इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज. सो दीज टू सेल्स आर अपोजिंग ईच अदर. सो व्हेन दे आर अपोजिंग ईच अदर, देन रिजल्टेंट EMF, अगर सपोज इट इज ऑफ 5 volt, this is of 2 volt. So this combination of two cells will behave like a cell of EMF 5 volt minus 2 volt is equal to 3 volt. So resultant EMF of this combination is 3 volt. So obtain null point for this, और ये 120 सेंटीमीटर की लंबाई पे है. Now if you look here, both cells are joined in such a way that both are trying to send current in same direction. ये इस तरफ भेजना चाहता है, ये भी इस तरफ. सो ऐसे में resultant EMF will be E1 plus E2. सो यहाँ पे resultant EMF 3. सो कम लेंथ पे बैलेंस होगा. इसके क्रॉस पोटेंशियल, दिस कॉम्बिनेशन इज एक्टिंग लाइक अ सेल ऑफ 3 volt. इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 3 volt. दिस कॉम्बिनेशन विल बिहेव लाइक अ सेल ऑफ 7 volt EMF. यू कैन से दिस कॉम्बिनेशन इज लाइक अ सेल ऑफ 7 volt EMF. तो EMF ज़्यादा, तो इट विल बी बैलेंस्ड एट लॉन्गर लेंथ. सो AJ dash, it is 300 centimeter, it is given. So calculate ratio of E1 and E2. So in first case here, पहले सेल ऐसे जोड़े थे, तो resultant EMF is E1 minus E2. This is equal to K into 120. KL होता है ऐसे, E is equal to KL. So in this case, अगर इन सेल्स को हम ऐसे जोड़ते हैं तो they will act like a cell of EMF E1 plus E2. This is equal to K and this length is 300 centimeter. Divide these two, you will get, and solve, you will get ratio 7/3. Now second is balancing length for this single cell. Suppose एक अकेला सेल है, उसकी बैलेंसिंग लेंथ निकालनी है. सो ये निकाल दो आप, ये अकेला सेल रहेगा, इसके लिए बैलेंसिंग लेंथ कहाँ बैलेंस होगा. इसकी EMF 5 volt है, तो 5 volt वाला कहाँ बैलेंस होगा. सी इसकी वैल्यू एप्सिलॉन 2, इसको यहाँ पुट कीजिए आप, एंड फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट एप्सिलॉन 1. एप्सिलॉन 2 की वैल्यू से E2 की वैल्यू यहाँ पुट करी. सो ये आ गया E1 माइनस वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन 2 ये है, इज इक्वल टू 120K. Solve this, you will get epsilon 1 is equal to 210K. चलिए मान लेते हैं this cell is balanced at length L1. So we also know E is equal to KL. So KL या KL1 जो भी लेना है आपने, से L ले लेते हैं. So this EMF according to this E is equal to
KL. So E1 is equal to KL is equal to 210. So from here K or K cut L1 is 210. Another numerical. This is primary circuit. This is resistor of 15 ohm. The resistance of this wire of constant is given 10 ohm. इस सारी तार की रेजिस्टेंस 10 ohm. Length is 1 meter or 100 centimeter. Find K. So you focus only on this circuit, primary. This is primary circuit. ये सपोज आई करंट भेजा इसने इधर, नीचे वाला सर्किट जो है इसको छोड़ दीजिए. सो आई करंट जा रहा है. सो इसमें आई करंट जाएगा. देयर विल बी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड बी पॉइंट. सो व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट? इट इज 15 और इसकी 10 ओम. सो इट इज 25. सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस. सो इट गिव्स यू 0.08 एम्पियर. K is potential difference between point A and B upon length of AB. So VAB is I into RAB according to Ohm's law. इन दोनों points के बीच में potential difference ये आएगा I into RAB divide by AB. I we have calculated. RAB is 10 ohm. So AB is 100 centimeters. So it is the potential gradient. Now current in the secondary circuit. ये नीचे वाला circuit secondary. Now if you consider this is positive terminal. current ऐसे आएगा, ऐसे 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 और ऐसे वापस आएगा. Now resistance of this circuit is 1.2 plus 0.3 is 1.5. EMF 1.5. So now current is 1.5 divided by 1.2 plus 0.2. This is 1 ohm. Now this is internal resistance of cell. So जब यहाँ से करंट निकलेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके टर्मिनल्स के बीच में कम हो जाएगा. So according to TPD, terminal potential difference is EMF. V is equal to E minus I into internal resistance. So E is 1.5, I is 1 ampere and R internal resistance is 1.2. So it is 0.3. So we can say इसके बीच में which are terminals of cell, ये इन दोनों के बीच में C और D के बीच में TPD terminal potential difference is 0.3. So potential difference across this resistor will also be 0.3. This is at 0.3 volt. This is at 0 volt. So potential difference across this will also be 0.3 volt. So TPD is 0.3 volt. So ये galvanometer. So you are obtaining balancing length for this potential difference C और D के बीच में या इसके across potential difference. It is equal to TPD. So potential difference across AO will be equal to potential difference between the terminals of this cell C और D जो इसके terminal है. So potential difference across AO is equal to potential difference across CD. CD के across जितना potential difference उतना ही AO के across when galvanometer shows no deflection. So potential difference across AO is equal to K into length AO. So potential difference across AO is potential gradient into length of AO wire. This is potential difference across CD is 0.3 volt. K we have already calculated, put its value. L or 0.3, it gives 37.5 centimeter. Then last question. These are two graphs of potential difference versus length of wire or potentiometer for two potentiometers A and B. So which potentiometer is more sensitive? We know slope of V is equal to Ki. This is like y is equal to 3x. So it is called slope of line. So here slope is K. K means potential gradient. So and slope we know it is tangent of theta.
सो इसकी स्लोप कम होगी, इसकी स्लोप ज़्यादा होगी। बड़ा एंगल तो स्लोप ज़्यादा। tan ऑफ बड़े एंगल का बड़ा होता है तो k इसके लिए बड़ा होगा और इसके लिए इसकी स्लोप कम होगी। सो वी प्रेफर पोटेंशियोमीटर V बिकॉज k छोटा मीन्स पोटेंशियल ग्रेडियंट छोटा, और पोटेंशियल ग्रेडियंट छोटा मीन्स मोर sensitive. So B is more sensitive than potentiometer A. So that's all with this current electricity chapter is over. Tomorrow I will start next chapter, magnetic effects of current. So thank you for watching.